हेलो गाइस, आज है 26 फरवरी एंड वी आर गोइंग फॉर एन एक्साइटिंग इवेंट। तो ये इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड और लेड बाय नंदिनी श्रीकांत मैम, जो एक बहुत ही बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है बॉम्बे की, एज वी ऑल नो। हाय नीर। Hi, what's up? सो हम लोग अभी जा रहे हैं फॉर दिस इवेंट। इट्स कॉल्ड आउट ऑफ ऑफिस फीचरिंग नंदिनी श्रीकांत, जहाँ पे वो कास्टिंग के बारे में बात करेंगी, कास्टिंग की दुनिया के बारे में बात करेंगी, हाउ कैन एक्टर्स अप्रोच देम, हाउ वी कैन क्रैक ऑडिशंस, हाउ वी कैन गेट गुड पार्ट्स। सो लेट्स सी क्या होता है। आई एम तो वेरी एक्साइटेड। एंड नीर, आर यू एक्साइटेड? I am definitely excited. और एक और चीज हम लोग भी बात कर सकते हैं उनसे. So I don't know what's gonna happen there, but let's see. सो देखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं क्या होता है। वहां पे सारे एक्टर्स होंगे, एक कम्युनिटी बनती है। सो लेट्स गो। एंड बाय द वे, वी बुक्ड इट ऑन डिस्ट्रिक्ट ऐप, 500 फॉर द इवेंट पर पर्सन, व्हिच इज वेरी नॉमिनल टू गेन सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड टू लर्न समथिंग न्यू। तो चलो, वी आर प्लानिंग टू व्लॉग दिस एंड आई डोंट नो अंदर हमें कितना अलाउड होगा, क्या ले पाएंगे, बट let's go with the flow. Dum dum dana, amo. Dum dum dana, Near. dum dum dana. Amo and near. Welcome to Amu and Neer. तो आज का इवेंट बहुत ही एक्टर स्पेशल इवेंट है, तो आप भी हमारे साथ चलो, देखो क्या होता है कलाकार की दुनिया में। Let's go! हम वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, सो दिस वाज द एंट्री. वी वेंट इन एंड वी फाइनली रीच्ड द हॉल वेयर दिस वाज हैपनिंग. इतने लोग अभी नहीं आए थे बिकॉज वी वर अर्ली एज यूजुअल, बट वी वेटेड फॉर नंदिनी मैम एंड अदर पीपल टू जॉइन इन फॉर द फन नाइट टू बिगिन. Here we are, and extremely excited, and let's see what happens. Hi ma'am, my name is Amna. Hi. And this is purely my personal experience that sometimes I've seen I do not get many auditions when it comes to web and film. So how do we know that our profile is reaching the right place, or casting directors know that we exist in the market? There are so many actors now of one particular age group that it's very challenging. I totally get it. There is a system that all offices, some of them are better than some. I feel like my peers may. I feel like Mukesh has it very organized now. I don't know what casting pay, but I know like there's Joseph, they're very organized, so everyone's things are there. It also depends on who's doing what work at what time. If there's a casting team that's doing a lot of work, you're more likely to get a call in. I'm kind of boutique, so we don't do so much work because I lose my way. So then the time frame to get connected actors is limited in that sense. Yeah, you send your stuff and you keep your eyes and ears open. And yeah, I did a film in my early years called Luck by Chance, which I'm sure you all have seen. Have you? Yeah, that's what. Luck by Chance with good hair. You know, it's there. But I just want to add also, guys, please keep yourselves like super busy while you're at it. Like, I find today's actor quite marvelous. They're doing like so much more apart from just training and doing workshops. And there's such good workshops now. I find actors are doing dance. Like I have a lot of actors in my team. So much dance happening, training. The clever ones are doing theatre. I love theatre and saying that. Yeah. People are making their own content. I mean, thank God for social media. Thank God for Instagram because and whatever the content is, at least people are trying. I can't bear it if I know that someone is waiting कि मेरा कुछ break आ जाए तो घर में ही बैठे. And the interactive sessions went on and on and on. To become a lead actor is a very difficult goal to have. You say to become an actor. Yeah. So I would say you get 6 months on land, right? Yeah. So start doing things with an acting community, do courses, do theatre. Yeah, understand how it works. To block your date, block your date, block your date. And ultimately, when you see the final result on the screen, it's totally a different character, totally different.
how that happens and why that happens. I'm so glad you asked this question because you gotta have that patience and you gotta have that acceptance because things keep changing. It is very fluid. Anything can happen. That they sometimes change it to a woman. Yeah, right? It happens. People are thinking on their feet, on set, yaha, waha. I don't understand this dress a particular way because I mean, look at Ranveer Singh. Yeah, he was like unique. Yeah. He chose his own fashion. Like, come on, nobody was like that. Now everyone, even at weddings, are wearing those clothes. Right? उसके पहले कहाँ पहन रहे थे? So I mean, like, you just find body is important to be fit. Yeah. But I don't even like that extra buff things. Yeah. Thank you very much. Fitness is very important. Yeah. You know, grooming is very important. That I've seen happen. I worked in a bunch of films in Dharma, so I know grooming is very important. I learned that from there. Yeah. So I'm actually married to an actor and I never help him with cues. I get it. Yeah. घर का काम It was just a joke, yaar. I was just being funny. Funny? I mean, तुम जो जीना है वो कर सकते हो क्या? हाँ? इमरान ये क्या? He's so cool. इमरान वो क्या? He's so funny. Just grow up. कॉलेज को खत्म हुए 10 साल हो गए हैं. Just grow up. It was just a phone, यार. मैं ढूंढ लूँगा. मतलब it's okay. Sorry, अर्जुन का टी-शर्ट पहन के हूँ. Just look at him. Just look at him. Please tell something. Please say something on this movie. Now what to do? It's like a beanbag. Yeah, full of actors and it keeps changing and keeps shifting. And I'm still mailing people who mailed me in 2015 and saying, guys, are you still acting? If you're acting, can you please send me a new thing? Some don't reply. Some have got, I mean, I'm still like trying to connect with people who send me pager numbers. It's so disorganized in that I have a visual. Okay, every day there are 5-6 people with suitcases. You know the filmy one? I keep getting that visual one. So it's now hard to lock it in. Yeah. I just wanted to ask that from a director's perspective, like, are you noticing any trends or a view that a director decides that this is the particular trend you are observing, that this is the talent or this is the particular aspect that I want in an actor? The director has been doing work for 30 years has a different approach and frankly is a little lost in a way when it comes to casting, except like then they get tuned in because it keeps changing, right? It changed for me over 3 decades or 2.5 decades. So, you know. It's also fake, you know, and especially in ads, huh? Because the people sitting and making the final decision are agency and clients. They are not even connected in that way to actors and performers. In fact, I do ads very rarely now. I did a lot in my early years. I do with a stone on my heart. Because I'm like, I don't even know kisko role mil jayega, you know. I don't even know. I don't even have any idea where it's going to go. I think हमने बहुत अच्छे auditions किए and then they're like, we need more, where is shit, you know. So it's like one of those things. So you just keep doing that. Yeah. But do other stuff also. The fun session ended. Everybody was making contact, socializing, and just having fun. And it was kind of a chill night. And yeah, that was it. सो हमारा इवेंट हो गया है ख़त्म. अब हम आपको उसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे. सो द एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड. देयर वर एक्टर्स फ्रॉम अराउंड द सिटी, फ्रॉम अराउंड द कंट्री, जो बॉम्बे में रहते हैं, जो एक्टर्स बनने आए हैं. इट वाज सो गुड, लाइक अ कम्युनिटी फीलिंग कि भाई हमारी तरह भी लोग सपने देखते हैं. और नंदिनी मैम की बेस्ट पार्ट क्या थी कि नंदिनी मैम वाज सो वेलकमिंग, शी वाज सो वार्म एज अ पर्सनालिटी दैट वी ऑल वर नॉट हेजिटेटिंग टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ हर. हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में चिल कर रहे हैं, एक हाथ में कुछ मॉकटेल या कॉकटेल पी रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एक्टिंग, अबाउट कास्टिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग. And yeah, so it was a lovely experience. Be you, that was the biggest take home from this event, that जो आप हो, जो आप सपना देख कर आए हो, be you, have patience. एक और चीज़ मैम ने बोली थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि घर बैठकर वेट मत करो. मैम ने एक और चीज़ बोली थी दैट कीप योरसेल्फ बिजी.
And this is Neer. Neer is back. Hi, Neer. Hi, what's up? क्या So- बात चल रही है? तो मैं बता रही थी मैम के बारे में that she was so welcoming as a person. She was so Yeah. warm that we all felt as if we were at our own home discussing about acting, about dreams. Really, truly. And एक और चीज मैम ने ये बोला था ना कि एक्टर्स को घर नहीं बैठना चाहिए. वेट करो अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन साथ में मेहनत करते रहो. We felt good and बस यार सीखने को यही मिला कि मेहनत करते रहो, प्रोफाइल्स भेजते रहो, मेल करते रहो, लोगों से मिलते रहो. That's what an actor can do. Also, उन्होंने एड्स के बारे में एक चीज़ बोली थी, एडवर्टीजमेंट्स के बारे में ये बोला था मैम ने कि यार देखो वो सब ना क्लाइंट जिसका भी जो भी ब्रांड है, बिजनेस जिसका भी है, उन्हीं के हाथ में होता है कि उन्हें कैसे चूज़ करना है. कास्टिंग डायरेक्टर का बस एक्टर्स पहुंचाना होता है. So, और कास्टिंग में मैम को 20 साल हो गए हैं और मैम ने फिर भी कहा कि एड्स आज तक समझ नहीं आती. कई बार ऐसे लगता है कि ओ दैट पर्सन डिजर्व्स टू बी कास्टेड, लेकिन कोई और डिजर्व हो जाता है. तो इट्स मोर ऑफ लुक मैच एंड लक रादर देन मेरिट, आई फील, है फॉर ना. एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई वॉज सिलेक्टेड इन अ सैमसंग एड. एक दिन पहले आई वॉज सिलेक्टेड, मुझे कॉस्ट्यूम वगैरह की भी डिटेल्स मांग ली थी कि मेरी बॉडी वगैरह की. एंड बॉडी वगैरह मतलब अरे मतलब मेजरमेंट्स मांग लिए थे. एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड. फिर रात को मतलब नेक्स्ट डे शूट था, मुझे रात को 12 बजे फोन आता है कि हाय यू कैन रिलीज योर डेट्स बिकॉज वी आर नॉट शूटिंग विद यू नाउ, सो यू कैन रिलीज योर डेट्स. तो मतलब किसी और को सिलेक्ट कर लिया उन लोगों मतलब ने. आई फील ये रिजेक्शन तो एक एक्टर की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. रिजेक्शन स्टोरी मेरी भी है. रिजेक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि समथिंग दैट डिडंट कम आउट ओनली व्हिच आई हैड शॉट फॉर, दैट आई विल शेयर विद यू इन अनदर वीडियो समडे जब हम रियल टॉक करेंगे. पर बस यार, that was our experience today, and we thought that whoever, if you are also an artist, if you are also a person living in Bombay trying to achieve something in this industry, तो शायद आज के हमारे इस इवेंट से आपको कुछ मिल जाए. तो हाँ, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग. Yeah, and keep hustling, keep working on yourself. Be a better man, be a better girl, be a good human being, and that's all life wants from you. And life is your world is yours. And Tara, bye bye. See you in the next video. Like, share, subscribe. So Amu and Neera are signing off. Do-da-da-da. Amu and Neer.